Diwali is also known as Deepavali and is one of the biggest festivals celebrated in India. Diwali is the festival of lights. During the festival, people light up their houses with diyas and candles. They worship the Lord Ganesha for welfare and prosperity and Goddess Lakshmi for wealth and wisdom. So children, as we all know that Diwali is coming, so on the occasion of Diwali, today we will going to make a paper diya. Okay, so let's see how we can make it. The material required to make these diyas are different colored fluorescent sheets, scissor, fevicol, pencil, cutouts of red, yellow, white paper and cutouts of red, golden and silver glitter sheet, some decoration items like stones and ball chains. Okay, so let's start. First, what you have to do, you have to take this sheet and fold it like this way. Align the corners and make a clean crease. Okay, first we will fold it half and then we will fold it again. So we get 4 parts of this sheet. Okay, like this way. And now we will cut one part from this whole sheet. Okay, for cutting you have to take your parents' help. You don't need to cut it by yourself. Okay, so like this way we will do fan folding of this part or this sheet. Okay, I am using 1/4 of this sheet. You can use whole sheet or half sheet also. Okay, it's according to you कि आपको अगर बड़ा दिया बनाना है तो आप बिग शीट भी यूज कर सकते हैं, एंड स्मॉल बनाना है तो आप इसका कट भी कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम मेकिंग स्मॉल दिया by doing fan folding like this way. Only cutting part you have to done with your parents, and fan folding you can do it yourself. And after doing fan folding, fold it half like this way and this kind of design came out. Okay, like this way. And now what you have to do, you have to use fevicol and stick it like this way, जिससे कि हमारा प्रॉपर एक दिया का शेप हमें मिल जाएगा. Fold it properly, tightly. Okay, and press it hard. And now we will use some fevicol on the other side. Okay, so put it some fevicol over here and stick this part also. Press it again very tightly. So children, our one is ready with the orange color. So now we will make it again with this pink color. Okay, same we have to do it. Align the corners and make a clean crease. First we will fold it half. Okay, and then we will fold it again. Same you have to do, align the corners and make a clean crease.
You know na children, in the first one we have taken only 1/4 of the whole sheet, and in this I am taking 2 parts, okay, or you can say half sheet, like this way. So it's your choice completely कि आपको कितना पोर्शन लेना है शीट का. मैं बस आपको डिफरेंट वे में बनाना सिखा रही हूँ कि हम वन पार्ट लेंगे शीट का तो हमारा दिया कैसे बनेगा, 2 पार्ट्स हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा कैसे बनेगा. पैटर्न सेम है, वे सेम है बनाने का, बस हम इसको एक डेकोरेट अलग अलग वे में करेंगे, ओके, एंड डिफरेंट कलर से बना रहे हैं, ओके चिल्ड्रन. एंड इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली आपको किस टाइप का दिया बनाना है, ओके, कौन सा बनाना है, किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है. तीनों दिया बनाने के तरीके, वे, पैटर्न सब सेम है. So children, as you can see that our fan folding is done and we have to fold it half again, okay. And we have to stick it like we have done already, like this way. Press with your fingers tightly. And we have to apply Fevicol on the every point, okay. You can see this कि मैं हर लेयर पे फेविकॉल से स्टिक कर रही हूँ बिकॉज इसमें लेयर्स हमारी ज़्यादा है, हमने 2 पार्ट्स लिए हैं. सो हमें एवरी लेयर के स्टार्ट होने पे इसे फेविकॉल से स्टिक करना है. So children, our second is also ready. Now it's time to do third one, okay, with this yellow fluorescent sheet. Again, same way, you have to align the corners, make a clean crease and cut it, okay. And for cutting, you know ना, you have to take your parents' help, okay. आपने देखा हमने इसमें कौन सा वाला पार्ट यूज़ किया है, इसका प्रॉपर हाफ पार्ट यूज़ किया है, ओके. And now we are doing fan folding again. Once again, after fan folding, we have to fold it again, okay, like this way, and press it hard. And now we have to apply Fevicol on this area.
एज यू कैन सी दैट हमने डिफरेंट पार्ट्स से बनाया है, तो हमारे दिए की शेप डिफरेंट आई है ना। सो हम इसे अब चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्ली ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको इसको फेविकॉल लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ना है, जिससे कि ड्राई हो जाए अच्छे से। ओके, नाउ कीप देम असाइड एंड नाउ वी विल मेक फ्लेम ऑफ दियाज। ओके, आपको पता है ना फ्लेम 3 कलर्स के होते हैं, रेड, येलो एंड वाइट। ओके, मैंने 3 कलर्स यूज़ किए फ्लेम के लिए। आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर्पल, ब्लू। ओके, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग these 3 colors. Okay, as you can see. So draw shape of flame. Okay, and for this you can take help from your parents also. So 3 different shapes बनाए हमने फ्लेम के लिए, 1 big and then उससे small and उससे small. Okay, and now we will cut them all, and for cutting also you have to take your parents help. Only fan folding part and decoration part you can do it by yourself, but for cutting and for drawing you can take your parents help. So we will cut all of them, and after cutting we will stick it. Okay, and same we will do it with these glitter sheets. Okay, and ये आपकी चॉइस है कि आपको फ्लेम ओनली नॉर्मल पेपर से बनाना है या ग्लिटर शीट से बनाना है। मैंने दोनों तरीके फ्लेम्स आपको दिखाया है ऑलरेडी। ग्रीन जो दिए हमने बनाए हुए हैं उसमें यू कैन सी इजीली। ओके, so our flame with the normal paper is ready. Now it's time to make flame with the glitter sheet. Okay, same technique we have to follow. Draw shape and then we have to cut them and then we have to stick it. Okay, so as you can see that both the flames are ready. So now we will stick it. Okay, I'm choosing this glitter sheet flame and we will stick it over here. Okay, and as you know that glitter sheet इतनी easily stick नहीं होती, so I'm just taking a small piece of a paper. Okay, and stick it over here, and then we can easily stick it on the fluorescent sheet. Okay, like this way, and some Fevicol again on the white sheet over here, and now stick it over here like this way. Okay, yeah, it's ready now. Okay, press it very hard.
Now you have to stick this flame on this pink diya. Okay, and you have to follow the same technique with this orange diya also. Make a flame and then you can stick it. Okay, so like this way you have to follow the technique. First you have to make a diya with the fan folding, then you have to make a flame, and then you have to decorate. Okay, so today I will show you one diya only. Okay, how to decorate it. So let's start our decoration part. Okay, so right now I am taking stones, small stones, and if you are not having any decoration materials, so you can use bindis also, or you can do paint also. Okay, एंड इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि आपको किन चीज़ों से दियास को डेकोरेट करना है. ओके, जो हमारी ओल्ड ज्वेलरीज होती है हम उनसे भी कुछ स्टोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं दियास को डेकोरेट करने के लिए. बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डेकोरेट करने के लिए तो आप नॉर्मल दिया भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट ऑल. ओके, मेक योर दिया ऑफ योर ओन चॉइस. So children, it's about to over. Okay, and my diya is ready. So children, you can see that मैंने तीनों दिए अपने डेकोरेट कर लिए हैं like this way. And now it's your choice कि आपको किस तरीके से अपना दिया डेकोरेट करना है. आप इन तीनों में से भी चूज कर सकते हैं. So now it's your turn.
we will meet in our next video. Till then, keep smiling. Wish you all a very happy Diwali and thank you.